From Asia's highest peaks to its valleys downstream, how people and wildlife are coping with climate change. Voices from the roof of the world. Incredible things happen when land meets water. A dizzying variety of life begins to thrive. Healthy wetlands nourish both long-distance travelers and stealthy permanent residents, to be admired or feared. Wetlands are also critical for human survival. They soak up torrential rains and overflowing rivers, mitigating increasingly catastrophic floods. During droughts, they can replenish parched fields by releasing water from natural reservoirs. They can even filter out pollutants from human waste. But more than anything, wetlands are nature's nurseries. They are some of the most biodiverse ecosystems on Earth, supporting 40% of the world's wildlife. But wetlands cannot survive without water. As the climate changes, rains are becoming uncertain, droughts more severe, and it's getting hotter. And the Indus River, Pakistan's lifeline, has been crippled by dams and pollution. But one threat looms above all others. Melting glaciers provide 80% of the Indus River's water. When glaciers shrivel, wetlands dry out, endangering the future of both people and wildlife. On a floating village in the middle of Pakistan's largest lake live a people called the Mahanas. Their lifestyle and culture are over 5,000 years old. किस्ती जगह है ना, ये सांझ के सती पीढ़ी की किस्ती है। दादा बाबा बड़ा दादा ये सब ने किस्ती जावा न पनाई थे। असांखे न हुई बुख जी परवाह, का शइ न हुई, असांखे हर शइ खुदा कान ॾींदा आहिनि पुठिते माण्हू खे। मच्छी जो कंदा आहियूं वापारु। पोइ इहे सॼे पाकिस्तान में असांजे मुल्क जी मच्छी वेंदी आहे। Bashir belongs to a new generation of Mahana who have settled on shore. He remembers the good times fondly. सोना उठना खाना पीना शादी वगैरह जो कुछ भी था हमारी बड़ी किश्तियों में था।
हमारे को कोई टेंशन नहीं था। पहले हमारे मन झील के अंदर सब्जियां है ना, सारी झील के अंदर थी। अनाज की कोई टेंशन नहीं थी मुहानों के लिए। But Lake Manchar has changed drastically for the Mohanas. ये जहरीला पानी जेका मोकिलियो न असांजे तबाह के पिछड़ी। ये पानी जहरीला आया, असांजी हर शइ ख़तम, ख़ुशी असांजी ख़तम। पहले मिठा पानी दरिया जा, ये सब पानी असां उहे सभु थी काबू। हाणे ये मच्छी है, उनमें छा सा पेट थींदो। इसलिए हम ये घर बनाए हुए हैं अभी। जब हम किस्तें छोड़ के आए हैं तो मज़ा नहीं आ रहा इधर, तो बहुत मुश्किलात हो रही है। अभी अनाज के लिए बहुत तड़प रहे हैं। हाणे एक ड्रम 40 रुपया पानी जी पीऊं किथों आणी? इहो पानी पीऊं था कोड़ो, डॉक्टर ॾे वञूं 2000 खणी वञूं। बहुत दुखी जिंदगी ये काट रहे हैं हम यहाँ पे। आज खाया है तो कल अल्लाह देगा, ऐसे सोच रहे हैं। Fishing is becoming harder in Pakistan's marshes. But the pied kingfisher is up to the challenge. This family of master fishermen are warming up for a day of work. A pied kingfisher is perfectly designed for the job. It is the largest bird in the world that can hover in still air, beating its wings 10 times a second. Its head is perfectly still, while its tail steadies the body. Once the target is locked down, it commences its dive. Because hovering is so energy intensive, a pied kingfisher must catch up to half its body weight a day. And even more when there are new mouths to feed. The chick is big, just like its appetite. It eagerly awaits the parent's return. But Dad is holding on to the chick's next meal because he knows it's time for the chick to spread its own wings. The chick doesn't take the bait. And in the end, it can't even hold on to the fish. It's a scary world out there for a young kingfisher. The towering egrets with their threatening beaks, the ferocious mongoose, and the bullying crows. But the biggest threat it will face is the loss of its habitat. A third of the world's wetlands have vanished since 1970, contributing to a decline of over 80% of the freshwater fish. Industrial effluents and illegal fishing are also responsible for this loss. ॿियो फिशरी वाह जेके ठीके ॾियनि उनखे ॼारो हणनि ऐं
अध इंच हाणे ॿिज सड़की अचे काबू सुक बसो ते उतो लॻो तो हले पर असां के माण्हू खाइनि था त के ईअं सुम्ही था पवनि. Pakistan is one of the most water-stressed countries in the world. But we are still blessed with 19 Ramsar sites, which are wetlands of international importance. Every year, over 1 million birds pass through the Indus Flyway. As dawn breaks over Lung Lake, competing ducks clamor for their favorite spots. It is a smaller, healthier neighbor of the ailing giant, Lake Manchar. But the lake still attracts flocks of migrants from as far away as Siberia. In December, the marshes are teeming with ducks, which have flown thousands of miles to get here. Carrying excess baggage or body fat is not an option. It would make these ducks too heavy to fly. So healthy refueling stations are critical. To an untrained eye, all ducks may look the same, with their stout bodies, short wings, and flat beaks. But one bird stands out in the crowd: the northern shoveler. With its broad bill, it can put its beak just about anywhere underwater and shovel out its food. It's easy to be a glutton when you have the right equipment. But those who aren't so well endowed have to put in a little more effort. Like these elegant pintails. It is easy to guess where their name comes from. Bottoms up and heads down. That's how pintails and mallards reach the tasty tidbits. This seemingly clumsy behavior is called dabbling. All ducks spend a lot of time grooming their feathers. A nice bath removes parasites and dirt. Afterwards, drying stations are in high demand for all the dandies, who must comb and oil their precious coats. A flap of the wings puts their outfits back in place. But looking good has a practical function. It helps the duck stay buoyant and cool. Cormorants take a very different approach. Their feathers are quickly waterlogged. What seems like a handicap gives the cormorants an advantage. With less air trapped on their bodies, they can dive deep in pursuit of fish. But after the fishing is done, they have to dry out their equipment. By spreading their wings in this awkward pose. Deep in the marshland's reeds, another European visitor is hiding in the bushes. The spotted crake's colors are the perfect camouflage. Its long toes help the crake saunter over soggy mud as it searches for invertebrates.
and its short, thin body allows it to run through vegetation in case of an aerial attack. A marsh harrier is gliding low to follow its prey. It's a hunting tactic called quartering. It often ends with a successful kill. But here in the wetlands, even harriers have their enemies. A mongoose can easily steal its kill. And looting is not the only strategy of this creative hunter. This mongoose has studied the cormorant's fishing holes. It puts that knowledge to good use. After an epic journey of 3,000 kilometers, the Indus River finally reaches the Arabian Sea. Branching into a massive delta that has sustained wildlife and people for ages. एक कुदरती निज़ाम है ना, दरिया सिंध कितने हज़ार सालों से वो अपना रूट बनाता हुआ कभी कहाँ से अपनी धरती को जन्म देते हुए। Over several millennia, farmers like Ghulam Muhammad have tilled the rich sediments deposited by the Indus. इसमें कोई भी फसल जो है, कोई भी पौधा आप लगाओ तो वो दरिया सिंध की तरह चमकदार रहता है। ऐसा कोई पौधा मेरे ख्याल में नहीं हो जो आप इस ज़मीन में लगाएं और वो ना उगे। इसकी खूबसूरती का राज जो है वो ये है कि ये दरिया सिंध से मुंसलिक है, दरिया सिंध का किनारा है। इस मिट्टी में दरिया सिंध का जो दूर दूर से जो रेत आता है उसकी खुशबू आती है। But now, all this bounty is threatened. And so is Pakistan's food. इंसान जो है वो इतना आगे निकल गया है कि वो कुदरत से जा टकरा है। उसका नतीजा हम जो है ना वो भोग रहे हैं। पानी का ना होना, बारिशें टाइम से नहीं होना, टेम्परेचर जो बढ़ गया है, ये तो 10-15 साल से बढ़ा है, पहले तो नहीं होता था। पान की फसल यहाँ बड़े तादाद में होती थी। पान का जो पौधा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 23 से 25 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इससे बढ़ जाए, 32 तक भी चला जाए, तो उसमें ये पौधा जो है वो उनको सूट नहीं कर पाता। तो अभी वो पौधे भी ख़त्म हो रहे हैं। The destruction of the delta's riverine forests are partly to blame for the rise in temperatures. A forest not only moderates heat and storms, it also provides refuge to some very special creatures, like the endangered and elusive hog deer. With its short legs and long body, it creeps under any barriers, keeping its head low just like a hog, hence the name hog deer.
for a shy deer, it helps to have antlers that look like dried branches. And these impressive racks are replaced every year. Bucks are solitary and will only come together during the breeding season when they try to impress females with their antlers. Historically, hog deer were hunted by lions, tigers, and leopards. Those predators are long gone. But there's still a good reason for the hog deer to keep its guard up. The mugger crocodile. A freshwater apex predator, perfectly adapted to rule the waters of the Indus Delta. Their eyes sit at the top of their head to better scan their surroundings. A waterproof membrane lets them open their eyes even when fully submerged. Their snout is more sensitive than human fingertips, the better to spot any movement. Their powerful tail can propel them up to speeds of 30 kilometers an hour. To traverse soggy mud banks, mugger crocodiles are equipped with webbed feet. But it's their jaws that really demand respect. Powered by formidable muscles, the crocodile's bite is the strongest in the animal kingdom. And their stomachs are the most acidic, so the mugger can digest almost anything. These impressive survival skills haven't changed much since the time of the dinosaurs. But now, mugger crocodiles and hog deer have been wiped out from most of their home range. Their future, along with that of the farming and fishing communities in the Delta, is in great danger. Humans and wildlife are now competing for the depleted natural resources. पानी ना होने के बजाय एक तो सीजनल बारिशें नहीं होती हैं, पीछे जो बर्फ़ जो गिरी हुई होती हैं वो पिघलते नहीं हैं। पानी दरिया सिंध में जो होता है उनको वो बांध के रख देते हैं, या कट्स में या जो कैनाल्स हैं उनको दे देते हैं, या ड्रम्स में छोड़ देते हैं। डेल्टा इलाके के हिस्से का जो पानी है वो टाइमली नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारा नुकसान होता है। जब मीठा पानी का बहाव बंद हो जाता है तो अर्बन सी का पानी है वही अंदर आ जाता है। लाखों एकड़ की तादाद में जो है वो ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। दूसरी ऐसी ज़मीनें भी बंजर हुई हैं जिन पर जैसे खारे पानी का सेपेज है। तो अपने बड़ों से सुनकर हमें तो यकीन भी नहीं होता कि जिस जगह अभी हम जाते हैं कि भाई इधर कोई चावल होते होंगे या कोई सब्जियां फल फ्रूट होते होंगे, हमें तो यकीन नहीं आता। पुराने दौर के जो फसलें होती थी ये नहीं कि बंदा रिलैक्स होता था कि भाई ये मैं फसल लगाऊंगा इसकी इनकम ये मुझे मिलेगी। आज का जो बंदा लगा भी रहा है उसको तसल्ली नहीं है, पता नहीं मौसम की वजह से ये होंगे भी या नहीं होंगे, पता नहीं गर्मी कितने तक स्टॉप करेगी, हो सकता हो इसमें बारिश भी हो जाए। The Indus Delta, once an oasis of serenity, is now being slowly engulfed by the waters of the Arabian Sea. हमारे ज़माने में पहले जो था उस टाइम में पानी बहुत था मीठा। समंदर के किनारे तक पानी मीठा था, उसमें मछली बहुत थी। A delicate equilibrium between sweet and salty water, sustaining a bounty of fish and generations of fishermen,
is now out of balance. वो मछली थी, वो जो पल्ले हम देते थे 5-6 किलो का, मगर वो मिलता नहीं है कि मीठा पानी नहीं है। पल्ले के अलावा कुल्ली था, मोराखी था, सिंगारा था, थेली था, और भी मछली था। अच्छे पानी में मीठे का मछली आता था, अभी तो वो नहीं है, ये काला पानी। अभी हमारा किश्ती गई पल्लू के ऊपर, 600 का पला लेके आया है, 2 लीटर तेल लेके जाता है, 250 रुपया उसका होता है, 300 रुपया बचता है, उसमें बस आटा लेके बच्चों को खिलाता है। पहले जो मला था वो बहुत खुश था, उसका इतना खर्चा नहीं था, वो अपने गांव में रहता था, उधर ही मच्छी मारता था, उधर ही अपना गुजारा करता था। अभी इधर तो मच्छी है ही नहीं, तो आदमी को जो मला है उसको तो बाहर जाना पड़ता है। हमारा आदमी जो है, जो मछली नहीं पकड़ता है, वो बेचारा लकड़ी काटता है, लकड़ी काट के बेचता है, उसको 100 रुपया 200 रुपया मिलता है, वो बच्चों का आटा लेता है। Sadly, the victims of environmental degradation are now contributing to the wetlands' destruction. मेन जो चीज़ है वो पानी है। पानी आ गया तो हमारे अंदर एक हौसला आ जाता है। डेल्टा के तबाह होने के जो राज हैं वो वही हैं कि दरिया से उनका पानी नहीं आने की वजह से डेल्टा है वो तबाह हुआ है। जो लोग हैं वहाँ से माइग्रेट हुए हैं, माल मवेशी का खात्मा हुआ है, पुराने जो आसार कदीम थे वो भी तबाह बर्बाद हो चुके हैं। 1.2 million people have already migrated from the shrinking Indus Delta to the sprawling city of Karachi. And thousands of Mohana have abandoned their ancient floating villages. Pakistan's beautiful wetlands, home to a spectacular collection of wildlife, are now in great danger. But their slow strangulation will come back to haunt us, when millions of our people will have to face water scarcity, rising temperatures, and the gathering storm threatening our planet.